Okay, so I wasn't going to vlog, but you know what? I might as well. Guess where I am? I mean, you probably know by the title. I am in Pune, and I'm here all alone. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. I'm staying at the hotel जहाँ पे so I'm staying at the hotel जहाँ पे हमारी farewell हुई थी. And oh my god, as soon as I entered the city, oh, 1 second. Oh my god, guess what? My last clip got interrupted because Paridhi called me and she was like, Priyanshi, I am in Bombay and you are in Pune. She works in Bombay now. So I was like, yeah. और हम दिल्ली में बहुत ही मुश्किल से एक दिवाली पार्टी पे मैंने जो की थी उस पे मिल पाए थे. तो फिर she was like, भाई वैसे तो हम मिलते नहीं हैं, यही मिल लेते हैं because tomorrow is Saturday and she doesn't have work tomorrow. And I was like, भाई आजा, 2 बेड्स अवेलेबल है मेरे पास. मेरे को कल मैं अपना काम कर लूँगी, तू अपना काम कर लियो, और कल रात को मेरी वापसी की फ़्लाइट है लेट की. एंड फिर उसके वहाँ से 2 घंटे का रास्ता है यहाँ पे. तो शी वाज लाइक लेट मी चेक. तो शी हैज़ अ मीटिंग. आई डोंट नो, आई होप शी कम्स बिकॉज इफ शी डज इट विल बी क्रेजी. आई थिंक दिस व्लॉग विल टर्न आउट क्रेजी बिकॉज अब मुझे थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है. बिकॉज मैं पहले जैसे घुसी थी पुणे, मेरे को लगा था यार मैं यहाँ पे इतने साल रही हूँ. साल एक्चुअली हाँ रही हूँ, तो इतने साल नहीं, 2.5 साल, बट जो भी, कि मैं ऑलमोस्ट 3 साल यहाँ पे रही हूँ. और मैं आई मिस माई फ्रेंड्स अ लॉट, लाइक एवरी सिंगल रोड. मतलब जब मैं आ रही थी तो एयरपोर्ट पे मेरे से कैब वाले ने, ऑटो वाले ने पूछा कि, मैंने बोला यहाँ जाना है. तो उन्होंने बोला कि इसके तो इतने पैसे लगेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बताए मेरे को. और मैंने बोला बेटा मैं नहीं हूँ मैं एक रोड नाप चुकी हूँ इधर की. आई नो हाउ इट वर्क्स. आई एम नॉट गोइंग टू पे दैट मच. एनीवे व्हाटएवर. आई एम सो एक्साइटेड. Anyways, I was telling you guys कि यही होटल था जहाँ पे हमारी फेयरवेल हुई थी ना. अब I don't know if you watched my farewell vlog, but if you haven't, you should, because that's also very बकचोद like this. और मेरे सामने जो एरिया है, लिटरली हम सब लोग वहीं खड़े थे. Let me show you. I'll insert the clips from my farewell. यहाँ पे पूरे tables वगैरह लगे हुए थे and we were standing here. That's the pool, if you can see. Covered है अभी क्या? नहीं तो मैं swimming कर लूँ. But yeah. Did you record like this? No. It's for Priyanshi's vlog. It's for memories. It's for memories. I honestly have lived like the best 2 years, and maybe the worst also, years of my life in Pune. And this city means so much to me, not because of how the city is, but because of the people. I don't know. My heart is just going like this. Crazy nostalgia, bro. I never thought that I'd be one of those people who would say कि oh college की life मुझे इतनी याद आती है, like you know that we're growing up. अब से सब same नहीं रहेगा, but we're actually all growing up, and then I just miss everybody so much. I don't know if you guys remember. तो कितनी ठंड लग रही है मेरे को, AC कैसे करते हैं. कुछ हुआ नहीं AC को, बट शुक्र है मैं स्वेटशर्ट लाई हूँ. हाँ, तो I was telling you guys, I don't know if you have watched my earlier vlogs, but लेकिन all of us, all my friends together, we used to play a lot of poker. हमने 1 साल सिर्फ जुआ खेला है, और वो भी 150 रुपये के buy-in में, because obviously we were like broke students that time. We didn't have a lot of money and everything. And now it's like we are all earning, we're all doing our own thing, but we're just not together. So I don't know, if you're in college right now, or if you're out living with your friends, just cherish this moment, because oh my god, do I miss the freedom. Like my parents are very chill back home also, but like it's like something else living by yourself, you know, like it's like you're a wild child with money, with other wild children around you, and you are just fucking around. I have a very bad lisp, okay, so मेरा S is काफी, you know what I mean. Okay, I'll show you. Let me try saying that. She sells seashells by the seashore. Seashells. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the sea. I think I should work now. वैसे मुझे यहाँ पे मुंह नहीं रखना चाहिए. आय. I'll see you guys later. Probably when I get something to eat, क्योंकि अभी तो फिलहाल I have to work. कभी मेरे मुंह से लगा था सुनोगे कि actually I have some work to do. पूरा टाइम तो मैं सिर्फ बकचोदी करती रहती थी यार.
I'm 21 years old. I feel like I'm 70. The amount of time all of us have spent here is insane. I can't honestly. So I have to share this with you guys. It's not that deep, but लेकिन मैं खुद decide नहीं कर पा रही हूँ. So now I have two options. Number one is that I can sleep right now, and then I can wake up in like 2 hours with a fresh mind, and I can finish my. Or I can just like get up, do my work, and then come back and like just chill. I'm really sleepy. I love hotel pillows, because they're so soft. I actually just switched the rooms because उस room में Wi-Fi नहीं आ रहा था और charging port भी नहीं चल रहा था. So I think before breaking into my room, I should not breaking into my room, breaking into my bed. I should show you, give you a room tour. And this is the most mediocre hotel I've stayed at, but it's fine. यहाँ पे इससे better है भी नहीं. We have a closet, obviously. इसमें मैं डालूं भी क्या? Then here we have the washroom. It's nice that I have so many mirrors. Like here also we have full length mirror. ऐसा है नहीं जैसे मैं कोई fashion show पे जा रही हूँ, but still. My bag, मैं इतना ही सामान लाई हूँ. Blah blah. My bed, and this is on the ground floor, I think. No, first floor जो भी है. So there's not really any view. पिछले room पे मुझे सब दिख रहा था, but it's fine, I guess. And now I am going to sit down and work. Oh, another mirror. Hi. Here's an update. I didn't sleep. Wait, let me keep my phone somewhere where you can see everything. So I didn't sleep. I started working and I ordered food. So I ordered it from this place called Yorkshire. I say Yorkshire, but I think it's yolk because it's like egg yolk. And they make this amazing, like if you're in Pune, they make these amazing mushroom cream toast. I have to show you. Like, look, that's the toast is just lathered in mushroom and cream. I can't wait to eat it. I realize it doesn't look very appetizing, but you have to trust me, it is very nice. This is so filling, you guys have no idea. This is like a proper meal. It's too filling. When Pratham and I used to live together, we used to order this a lot. Every single day we had to order, you know, because obviously खाना कितना ही बना लेती थी मैं मैगी और पास्ता, और हमारी कुक भी सिर्फ डिनर बना ली थी. This is like a trip down memory lane. This will always be home. Yeah, we're literally going down the road where Paiti used to live, और हम उसके घर भी जाके रह भी रहे हैं because हमारे पास वो घर ऑलमोस्ट 1 साल के लिए और है. होना चाहिए था इधर. Paiti हर किसी के साथ बात इतनी कर लेती है कि वो हमें कहीं भी घुसने देते हैं. I'm so tired. I miss my house so much. Actually, we're just gonna go order something and then we'll talk to you. मैं तुम्हें भाई सारी जगह देख के मुझे हो रहा है. Crazy. इस लिफ्ट में से मेरे को PTSD हो रहा है. भाई नहीं चल रही. Oh shit, PTSD सच हो गया मेरा. Crazy. How are you liking it? क्या कर रही है तू? Paiti को munchies हो रहे हैं and she wants to eat everything available on Instamart. But it's not available. अभी उन्होंने बोल दिया अनसर्विसेबल है तो वो रो रही है. शक्ल क्यों छुपा रहे हो आप अपनी? क्योंकि मुझे तेरे व्लॉग में ये सब चीज़ों के लिए नहीं आना. इस घर में हमारी इतनी ज़्यादा यादें जुड़ी हैं. That sucks. I miss this house so much. एंड श्योर आई एम. हमारा प्लान था कि हम ज़ारा चले जाएंगे क्योंकि आई वांट टू बाय स्टफ, पर लेकिन हमारे यहाँ के पास वाला ज़ारा बंद हो चुका है. इतनी दूर तो हम जाने से रहे. तो हमारी फ़्लाइट है
और मुझे 1 घंटे में निकलना है, तो हम बस पड़े हुए हैं। That's also hard because that's what we did. हमने किया ही है। अभी तक अगर मैं तेरे घर पे होती, अगर हम कॉलेज में होते, तो प्रथम मुझे लेने आ चुका होता। That's what's different. या मैं अभी तक घर पे चली जाएगी होती। Because तेरे को choice नहीं देता वो। हाँ, मुझे लेने आ जाता। पापा भी ऐसे ही करते हैं। Maybe. As you can tell that I'm back home. My trip was very hectic. I came back, I just took a shower, but I feel like it's not enough. So I'm in my parents' washroom. I left it here and it was full, but now it's more than half is done. And the only person who's capable of doing this magic is my mom. Okay, so I have ignored the picture I messed. I have very exciting news, you guys. Hi Matcha is finally launching tomorrow. Today is 10th of November and I'm launching it tomorrow because it's 11/11 and I just think it's the perfect date to launch. And also मेरे को इससे ज़्यादा लेट नहीं करना था। पहले I was going to launch on Diwali, पर लेकिन दिवाली के आसपास everything was so hodgepodge and I wasn't getting everything that I wanted. तो अभी we're launching it tomorrow. And I have started taking pre-orders. If you guys follow me on my Instagram, then you will see मैं Instagram पे सबसे ज़्यादा updates डालती हूँ, और obviously because it's like easier. And if you guys haven't followed me on Instagram yet, you should, because all my matcha related questions and then updates and every single thing, every single announcement goes on there. And you should also follow Hi Matcha's Instagram page, which I will link both the Instagrams in the description, so you don't have to go search for it. And if you do follow me on my Instagram, then you know that मैंने आप लोगों के लिए मैंने pre-orders लेना शुरू कर दिए थे. Like you guys could place your order before anyone else, but the actual launch is tomorrow, and I'm so excited. I've already gotten some pre-orders, and I just hope जितना भी matcha I have is enough for each and every order. And yeah, that's it. It's one of the most important days of my life probably, and I'm just dropping this news while putting my face mask, but that's just who I am. So if you guys are planning to buy my matcha and you do buy it, I would love for you guys to give me a review on Hi Matcha Official. Other than that, whenever you make it or when you get it or anything, just put it on your story, because I will definitely repost all the stories, and I'm just so excited for you guys to try it. I don't know, it is one of the biggest days of my life. I'm going on a walk क्योंकि मेरी कार मेरे पापा ले चुके हैं और मेरे घर पे कोई भी कार नहीं है अभी, एंड आई हैव टू गो मीट लक्षिता कृतिका, सो आई एम गोइंग टू मीट देम। आई जस्ट डिस्कवर्ड अनदर गेट मेरे पार्क में जाने के लिए, बट या आई कांट सी एनीथिंग क्योंकि इट्स ऑल ब्लैक। सो या आई एम गोइंग टू मीट लक्षिता कृतिका ऑन फुट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पास रहते हैं वैसे तो, बट लेकिन हम इतने बड़े आलसी हैं कि हम गाड़ी में जाते हैं। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है और मुझे डर भी लग रहा है। मुझे ना डर लगता है वहाँ को जंप करते हुए कि कोई स्नेक ना हो। ओह माय गॉड, एक्चुअली मेरे सपने में बहुत सारे स्नेक्स आए थे। व्हाट डज दैट मीन? ओके, सो आई एम बैक, एंड वो वॉक हमारे लिए इतनी मुश्किल हो गई थी क्योंकि हमारे पूरे सेक्टर में इतने ज़्यादा डॉग्स हो चुके हैं, उनका कोई पॉपुलेशन कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। एंड अभी आई हैव टू गो टू स्लीप, बट लेकिन बिफोर स्लीपिंग आई एम गोइंग टू एडिट दिस होल व्लॉग दैट यू आर वाचिंग राइट नाउ, क्योंकि माई ब्रांड इज़ लॉन्चिंग टुमारो। आई मीन टुडे इट्स 12:30 AM, एंड आई कांट बिलीव दैट इट्स एक्चुअली कमिंग टू लाइफ। दैट्स ऑल आई वांट टू से। मैंने ऑलरेडी पूरे ब्लॉग में बहुत बक कर दिया इस बारे में, सो you guys should go try it. Give Hi Matcha a try. You can DM me on Instagram, or you can also DM on the Hi Matcha page, and we'll let you know everything udhar. And then tomorrow I'm going to vlog again because I want to show you guys how I packed all the orders, how I'm dealing with the launch and everything. So that'll be in a separate vlog. But till then, good night. I love you guys. Thank you for supporting. Thank you for being there.